News that's coming in, it's BJP leader who is now backing MP Nishikant Dube's comments on the Supreme Court of India. The BJP MLA says what Dube said is right about the Supreme Court of India. BJP's Agni Mitra has said, how can the Supreme Court deny decisions that have been made by the MPs of the country? The CGI cannot deny the President's orders. If Supreme Court and the CGI run the country, then there is no need for the Indian Parliament. It was BJP MP Nishikant Dube who in a statement had said that the Supreme Court is pushing the nation towards anarchy. देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं? जो पार्लियामेंट, जो सांसद, जहां पर सारे भारत के सांसद लोग बैठ के पॉलिसी मेकर जो नियम बना रहे, रूल बना रहे, उसी नियम को आप खंडन कर देंगे तो ये कहाँ का नियम है? तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। अगर देश सीजीआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजीआई करे। Listen in to what Nishikant Dube had said with regards to the Supreme Court of India, after which there was a big controversy that started. Listen in to Nishikant Dube. आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। My colleague Piyush Mishra is now joining me on the story. Piyush, we are seeing one of the BJP MLAs now backing what Nishikant Dube has said. What Nishikant Dube has said, however, was pinpointed by the party president JP Nadda. Well, actually, Sharan, this is happening despite the directions issued by party president JP Nadda, where he categorically asked BJP leaders not to cross the boundary and not to speak or make any such remarks against the judiciary, because BJP, is of the view of respecting what the judiciary is doing. But now we are now hearing as to how Agni Mitra Paul and there are other BJP leaders also who have come out in complete support of Nishikant Dube. Agni Mitra Paul, who is a BJP MLA from West Bengal, has said, and I quote, that what Nishikant Dube has said is absolutely right. The President appoints the Chief Justice of India, then how can CJI deny the President's order? How can we deny that decision of the MPs and policymakers of nations? The country is run by CJI and the Supreme Court, then there is no need for the Parliament. That's what Agni Mitra Paul is now saying. Now we'll have to wait and watch how the opposition is going to react on this. But yes, opposition is going to certainly raise this issue in coming few days. What we are also learning from our sources is that during this Samvidhan Bachao Abhiyan, the Congress party is certainly going to raise this matter among the people, claiming that BJP does not respect judiciary. Thank you, Piyush, giving us all those details. We'll see the Congress also jumping in this controversy. BJP's MLA backing what Nishikant Dube has said with regards to the Supreme Court of India.